मसला कश्मीर के हवाले से एक अहम और बहुत अहम बैनुल-अक़वामी डेवलपमेंट हुई है और वो हुई है बरतानवी पार्लियामेंट में, जहां कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी के अराकीन ने कल मकबूजा कश्मीर पर ब्रेक्जिट की तरह का एक रेफरेंडम कराने का मुतालबा किया है। दोनों जमातों के पार्लियामेंटेरियंस इसमें शामिल थे। बरतानवी पार्लियामेंट में कश्मीर पर 13 रुकनी ऑल पार्टीज पार्लियामानी ग्रुप के चेयरमैन डेविड नटल और फिलिप डेविस ने कहा कि जिस तरह बरतानिया ने स्कॉटिश अवाम को खुद इरादियत देने के लिए रेफरेंडम का हक दिया और जिस तरह पिछले साल बरतानिया में यूरोपीय यूनियन से निकलने के लिए ब्रेक्जिट हुआ, बिल्कुल इसी तरह से कश्मीर में भी रेफरेंडम करवाया जाए। ये बरतानवी पार्लियामेंट की जानिब से मुतालबा सामने आया है। डेविड नटल ने कहा है कि कश्मीर का तनाज़ा बरतानिया राज की बाक़ियात है। बरतानवी हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी तारीखी जिम्मेदारी तस्लीम करे और कश्मीर का मसला हल कराए। Surely it's not a question of supporting either the Indian government or the Pakistan government. It's about supporting the people of Kashmir. Critically, scores of Kashmiris have been killed. Many thousands of civilians have been seriously injured. The use of pellet guns, Mr. Deputy Speaker, has left thousands of people, including children, injured and in many cases blind. I want to see the people of Kashmir being given the right to decide their own future, the right to self-determination, a right so historically exercised by the people of this country on the 23rd of June last year when the majority voted to leave the European Union. Britain was responsible for the partition, which leads many in the Kashmiri community to believe this country could and should be doing more to try and help resolve this matter. Yeah. कंजर्वेटिव खातून रुकन और पार्लियामेंट बरतानिया की नुसरत गनी ने कल बरतानवी पार्लियामेंट में कहा कि मकबूजा कश्मीर में 5 लाख भारतीय अफवाज को बर्बरियत की मुकम्मल आज़ादी है। 70 साल से कश्मीरी अपने खून से कीमत चुका रहे हैं। बैनुल-अक़वामी बरादरी इस तशद्दुद पर खामोश है और ये तारीख का स्याह बाब है। लेबर पार्टी से ताल्लुक रखने वाली उसके पार्लियामेंट मोहतरमा शबाना महमूद कहती हैं कि जबरी गुमशदगियां और इज्तिमाई खबरें भी अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से किसी तफ्तीश का बाइस नहीं बनी है। इस पर तफ्तीश होनी चाहिए। 70 years have been lost and Kashmir pays the price with lost lives and livelihoods. Last year, they saw an unprecedented level of violence and curfew with 68 civilians killed and more than 9,000 people injured during months of unbroken violence, the bloodiest episode in Kashmir's recent history. The shame of the international community for failing to recognise the violence and the lack of offer to support Kashmiri civilians is a bloody stain on all of our history books. Tremendous, appalling, sustained and deliberate misery has been visited upon the people of Kashmir for too long. The stories of disappearances, of the discovery of mass graves that has brought no official UN-led investigation whatsoever, the impunity of the police and the security forces, especially the implementation of the Special Powers Act of 1990. Mr. Deputy Speaker, if a people are humiliated and abused and allowed to lose hope and offered only despair in turn and no answers and no rights, then there will be uprising. It is inevitable.